Hello students, welcome to Geometry Public School. So as you all can see on the screen, target RMS 18 December 2022 30 most important one word substitution. As you people all know that in every year 5 marks directly you are getting from this topic. So in this video what I am going to present, that I am going to present 30 most important questions that will be for sure, means the guarantee of those questions is high in the exam. Okay, सो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, प्लीज़ ये जो 30 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर रही हूँ, इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा. आई नो टाइम बहुत कम है, आप रिविजन नहीं कर पा रहे हैं. सो माई मोटो इज़ टू मेक यू पीपल लर्न द पेपर्स और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वर देयर इन द एग्जाम, or the chances of the questions, the chances of those might be high in your exam. Okay, so be very careful and learn them because these questions are really very important. Also students, those who are targeting 23-24 एग्ज़ाम, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ज्योमेट्री हॉस्टल को ज्वाइन करें. हमारे सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सैनिक के लिए भी और आरएमएस के लिए भी. 1 जनवरी से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. लिमिटेड सीट्स हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सिर्फ 25 सीट्स हमने अवेलेबल की हैं. बिकॉज वी फोकस ऑन क्वालिटी एंड नॉट ऑन क्वांटिटी. मंथली आपको फ़ी पेमेंट करना होगा. फीस से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड आप जो भी इंक्वायरी जानना चाहते हैं आप इस नंबर को डायल कर सकते हैं. इस नंबर को आप डायल कर सकते हैं और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं. हम आपको फॉर श्योर सिलेक्शन देंगे, बट उसके लिए आपको हमें टाइम देना होगा, आपको ज्योमेट्री हॉस्टल को ज्वाइन करना होगा. सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, डू एनरोल योर सेल्फ फॉर द हॉस्टल बैच विच विल बी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी. Starting with today's class, this is the first question. Choose from the given options the word which can be substituted for the given word or sentences. Okay. So one who eats too much, that person is called as glutton. इस स्लाइड में, इस सीरीज में, इस वीडियो में मैं आपको जो भी 30 क्वेश्चंस कराऊंगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इट माइट बी पॉसिबल दैट इन 30 क्वेश्चंस में से आपको डायरेक्टली स्ट्रेट अवे 5 मार्क्स मिल जाएं, बट फॉर दैट यू नीड टू रिवाइज दिस वीडियो अगेन एंड अगेन. यू नीड टू वॉच दिस वीडियो. ओके. Answer of second, a person who presents a radio television program. So that person, you all know, that person is called as anchor. That person is called as anchor. Clear? Third, one who leads an austere life. अच्छा, austere मतलब होता है very simple and elegant. Simple and pleasant life. So very simple and pleasant, that is called as ascetic. That person is called as ascetic. Clear? Very important, mark this important. A list of books in a library. A list of books in a library is called as catalog. List of books in a library is called as catalog. Fifth, choose the correct one word substitution. A study of living things. A study of living things is called as biology. A study of living things is called as biology. Clear everybody? नेक्स्ट करेंगे हम. गिव वन वर्ड फॉर द सेंटेंस. स्टडी ऑफ बर्ड्स. स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज ऑर्निथोलॉजी. स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज ऑर्निथोलॉजी. सो अगेन फॉर सैनिक स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल्स और द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर सैनिक स्कूल, आपको 2 महीने की तैयारी करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है. ज्योमेट्री हॉस्टल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, जिससे you people can practice really very well. Okay. Again, to know the details, you need to call on the numbers which is 9528827121 or 7088827111. Clear everybody? Moving on to the next question. A person who does not believe in the existence of God. Remember what is given here? Does not believe. That person is called as atheist. That person is called as atheist. 8. A diplomatic representative of one country to another. Give one word for a diplomatic representative of one country to another. That person is called as ambassador. That person is called as ambassador.
9. A government by one person. A government by one person is called as autocracy. A government by one person is called as autocracy. 10th, the art of tilling the soil. The art of tilling the soil is called as agriculture. The art of tilling the soil is called as agriculture. Give one word for the following. A life history written by oneself. A life history written by oneself. उसको क्या कहते हैं? आत्मकथा. You call this in Hindi as autobiography. Autobiography. Clear? Again, one who travels by foot. One who travels by foot, that person is called as pedestrian. One who travels by foot, that person is called as pedestrian. The act of murder of a human being. Act of murder of a human being is called as homicide. Suicide means होता है खुद की डेथ करना, like murdering oneself. That is called as suicide, but homicide is act of murder of a human being. Next question we have, a person who believes in the existence of God, who believes in the existence of God, that person is called as theist. We have already done atheist is a person who does not believe in God, but theist is a person who believes in God. Question number 15, the place for luggage at a railway station. The place for luggage at a railway station is called as cloakroom. That room is called as cloakroom. A person living permanently at a certain place is known as that. When we live at a certain place, we are called as what? We are called as resident. That means we are the resident of this country, right? A sound that cannot be heard, this you people are aware of. This word is called as inaudible. Inaudible. Question number 18. An enclosure for keeping birds. Very important. An enclosure for keeping birds. This is called as aviary. Enclosure for keeping birds is called as aviary. Person with limited skill. So a person with limited skill is called as amateur. Amateur is a person who has limited skills. Okay students, again I am reminding you, we have only 25 seats with us. अगर आप हॉस्टल के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से ज्योमेट्री हॉस्टल को ज्वाइन कीजिए. अगर आप अभी भी ज्वाइन करेंगे आपको अभी भी एडमिशन मिल जाएगा. उसके लिए आपके पास एक मंथ एक्स्ट्रा होगा. कंप्लीट दिसंबर. जो बच्चे जनवरी में ज्वाइन करेंगे उनके पास कितने मंथ्स हैं? RIMC के लिए अगर आप जाते हैं तो आपके पास 6 मंथ्स मिलेंगे, बट अगर आप दिसंबर में ही ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेंगे 7 मंथ्स. एक महीने में आप बहुत कुछ कवर कर सकते हैं. इसीलिए 1 जनवरी का वेट मत कीजिए स्टूडेंट्स. जल्दी से जल्दी अपने एडमिशन्स को एनरोल कीजिए, अपनी सीट्स को रिजर्व कीजिए. ज्योमेट्री स्कूल के हॉस्टल को ज्वाइन कीजिए अगर आप फॉर श्योर सिलेक्शन चाहते हैं. आप डायल कर सकते हैं इस नंबर पर और सारी डिटेल्स रिलेटेड टू एडमिशन आप इजीली ले सकते हैं. क्लियर एवरीवन? अगेन नेक्स्ट वर्ड, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड. That cannot be believed is called as incredible. That cannot be believed is called as incredible. A thing that cannot be seen by the human eyes. A thing that cannot be seen by the human eyes. Obviously, it is called as invisible. It is called as invisible. Handwriting that cannot be read. Handwriting that cannot be read, that is called as illegible. Illegible. 23rd, we have a fictitious name assumed by an author. Very important question. Fictitious name assumed by an author, that name is known as pseudonym. That name is known as pseudonym. Clear? Okay, यूपी सैनिक स्कूल्स RMS, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा. आप जल्दी से ज्योमेट्री स्कूल की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप अपना सिलेक्शन को गारंटेड कर सकें. फॉर श्योर आप सिलेक्शन ले सकें. उसके लिए आपको ज्योमेट्री के चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, टेस्ट सीरीज परचेज करनी होगी और अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट इज नोन एज इनकॉरिजिबल. वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड एज इनकॉरिजिबल. Then we have a person skilled in many languages. A person skilled in many languages is called as linguist.
A person skilled in many languages is called as linguist. Study of civilizations through their material remains. Study of civilization through their material remains. It's called as archaeology. It's called as archaeology. Then a doctor who treats skin diseases. A doctor who treats skin diseases is called as dermatologist. Doctor who treats skin diseases is called as dermatologist. Policy of forcefully extending a nation's authority by territorial gain. The term for this words is imperialism. Imperialism is policy of forcefully extending a nation's authority by territorial gain. Next we have expression of sympathy, especially on the occasion of death of a person. Expression of sympathy, especially on the occasion of death of a person. No, that is called a condolence. That is called as condolence. When somebody dies and you go and offer prayers to them, that is known as condolence. 30 and the most important, one who goes on a journey to a holy place. So what we call them? We call them as pilgrim. Okay. Whenever somebody goes to a holy place, he or she is called as pilgrim. He or she is called as pilgrim. So students, in this video, my motto is to make you learn the 30 most important questions that are really important for your exam point of view. In order to know more facts, in order to know more such videos, you have to subscribe the channel. Bell icon को press कीजिएगा so that you people will receive important notifications related to your exam. नहीं प्रेस करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट डिटेल्स नहीं मिलेंगी. फॉर्म से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आपको सबसे पहले ज्योमेट्री स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करना होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स. कोई भी प्रॉब्लम होगी, स्क्रीन पर नंबर गिवन है, आप डायल कर सकते हैं. आप तब तक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने प्रोवाइड करे हैं उनको रिवाइज कीजिए. हम मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक, जिससे कि जब तक आप एग्जाम्स देने जाएं आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर अप हो जाएं. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर.